Article A again? Yeah. Okay, can someone tell me what did they read in Article A? What was Article A about? What was author's perspective in Article A? Yes, Ria? The author's perspective in Article A was that students should bring iPad in school. Okay, not students should bring iPad. His was कि students should be allowed iPads in school. अब iPad a student के personal या school दे रहा है, that doesn't matter. But they should be allowed to use iPad. Okay, wonderful, Ria, for sharing that. Okay, I will be now sharing my screen and we will begin. We will be seeing ki Article B में what is author's perspective today. And then we will be at the end of the class, at the end of reading both the articles, we will be comparing and contrasting both author. ये दोनों का perspective कौन सा है and आप किस author से agree करते हो. ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपको उसमें से एक चीज चूज करना पड़ता है, right? With your friends also it might be happening. All right. So the goals for this month, all of us will be excellent in online class and in daily homework, and excellent in whatever we be doing. Yes? In class, how can you be excellent? By paying a lot of attention and asking questions when you don't understand. In your homework, how can you be excellent? You are doing homework, all the homework that is given to you, you are doing it perfectly, right? Okay. And then all of us will read 8 books by the end of 4 weeks. After today's class, I will send you a book today to read. You will have today, tomorrow and day after, that is Friday, Saturday and Sunday, to finish reading the book. ठीक है? Now it's up to you. You can read it in one sitting. That is एक बार में आप उसको पूरी खबर पढ़ सकते हो, या फिर you can break it into 2 days. आज आधी पढ़ी, कल आधी पढ़ी. ठीक है? Okay, and all of our RC level will increase by 1. How will this happen? How will third goal happen? अपने आप तो नहीं होगा, just because मैंने goal set कर लिया है. If you do 1 and 2, then 3 automatically हो जाएगा. अगर आप एकदम excellent हो online class में daily homework में, in addition to that, if you are reading, then 100% I can tell you, आप सबका RC level increase हो जाएगा. Even students जिनका 5.5 है, your will reach up to 6.5. But you need to do this, okay? All right. Objective for today's class is same as yesterday's because we are continuing what we had started yesterday. Okay, now people are raising hand, they want to read. I will tell who all are raising hand. Afifa, can you read? Yes, teacher. Student will be able to compare and contrast opinion and perspective of two different authors. परफेक्ट परफेक्ट. तो हम एक ऑथर का आर्टिकल कल पढ़ा, नए ऑथर का आर्टिकल आज पढ़ेंगे. कल आर्टिकल ए था, आज आर्टिकल बी है. फिर हम देखेंगे दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, सेम सेम चीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है. ठीक है? एंड हम ये भी देखेंगे कि हम किस ऑथर के आर्टिकल से अग्री करते हैं, किस ऑथर ने हमें परसुएड किया. Okay, expectations everyone knows. Participate, raise virtual hand and keep yourself on mute when not speaking. And participate, how can you do? 2 things. Answer when I ask and then ask questions. You can also raise your virtual hand to say I want to read. That is also participation, right? Okay, so this we did yesterday. I told you point of view matlab hota hai opinion, perspective. The first question was what is author's point of view? Author का क्या opinion है article A में? Then how did this author's choice of word show us his perspective? Author ने अपने article में कौन से words use किए हैं जिसकी वजह से हमें author का perspective पता चल रहा है. For example, yesterday मिसबा ने एकदम correct बोला था कि author wants iPads to be allowed in school because he is writing notes book have become obsolete. नोटबुक्स अगर आउटडेटेड हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं,
अगर यूज में अब नो लॉन्गर होते हैं तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? आईपैड से ही पढ़ेंगे, लाइक दैट. Okay, now same both the questions we will answer for article B. After that we will think about which author persuaded you. Persuade मतलब आपको किस ऑथर ने कन्विंस कर लिया अपनी बात पे, किस ऑथर की आप बात मान गए. एंड ये बताने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट स्पेसिफिक टेक्स्ट एविडेंस इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग. ऑथर ने ऐसी क्या बात बोली, ऐसा क्या बात उसने ऑथर ने बोला जिसकी वजह से आप की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई, आप ऑथर की बात मान गए. ठीक है, गुड टू गो, वी कैन बिगिन. गिव मी थम्स अप इफ वी कैन बिगिन. Thank you Shreya, thank you Riya, thank you Jayashree, thank you Muskan, thank you Amrita and Raj, thank you Shashwat. Waiting for Akshay Asif. Thank you Aryan. Waiting for Akshay and Asif. Thank you Akshay. Waiting for Asif. Asif, can you give me thumbs up so that I know you are here? Hello Asif, can you give me thumbs up? Thank you Asif. All right, wonderful. Shaurya, can you give me thumbs up? I haven't seen your thumbs up. Shaurya, can I see your thumbs up? Shaurya, can I see your thumbs up, please? Shaurya. All right. Shaurya, I'm going to ask your name after 1 minute, 1 or 2 minutes. If you're not answering, I'm going to remove you from the meeting. I don't know if you're there or no. Okay. Reading में strategy simple है. Star आएगा तो we will stop and then we will summarize. Yeah. उसके बाद में second reading, second strategy क्या है? Difficult word है तो we will read before, after, and then we will guess the meaning. So yesterday we read this story, this article in which author said कि we should be allowed, students should be allowed to use iPads in classroom, right? So the author's perspective on iPad usage in the classroom is that students should be allowed to have iPads in the classroom. And कौन से words author ने use किए थे in the text? Now everyone notice कि किस तरीके से आंसर लिखा है. The text in article A says, then क्योंकि ये author ने बोला है, we are putting it in quotes. You also have to write it like this, okay? So pay attention. When you're writing something that the author said, you have to put it in quotation. Okay, the text in article A says, textbooks are obsolete, they are so outdated, we hardly ever use them at all. Fair? This evidence helped the author prove that iPad can be helpful to students. फिर हम complete करेंगे, फिर हम बोलेंगे ये line की वजह से ये proof है जो author को help किया है ये बताने के लिए कि iPads are helpful for students. Correct? तो इस तरीके से you will write. You will at the end you will write reason कि ये वाला जो line है ये helpful क्यों था, ठीक है? All right. So I will read the first paragraph and then I will ask 3 other people to read the remaining 3. Everyone, you can follow with me and you can, read at your end. Just keep yourself mute. Mute रख के आप पढ़ने का try कर सकते हो. All right, let's begin. Sure, iPad makes locating information easier. Sure, iPads are extremely portable. Sure, iPads are interactive, but do they belong in the classroom, replacing textbooks? Okay. Everyone be on mute. Okay. Sure, iPads make locating information easier. यानी कि information find करना easy होता है. आप बस search option में word डालो, आपका वो page automatically open हो जाए. So locating information easy हो गई, right? Someone is not on mute. Can I request everyone to be on mute? Afifa, are you on mute? Okay. Yes. Sure, iPads are extremely portable. Portable मतलब easy to carry. इतना छोटा सा होता है, भारी भी नहीं होता, तो आप आराम से इधर उधर उसको लेकर जा सकते हो, है ना? Sure, iPads are interactive. Interactive मतलब
You can engage with it, you can ask answer question, you can watch videos, you can do something with it. ठीक है? You can ask it question, it can give you answer or anything like that. ठीक है? Engage. But do they belong in classroom replacing textbook? So author is saying, I have to summarize, कि iPads are surely, they help us locate information easily, they are interactive, they are also easy to carry. But क्या वो सच में classroom में belong करते हैं textbook को ही replace करके? So now this is the question that the author is asking. Now see, ये वाला ऑथर और जो मेरा पुराना वाला ऑथर था, उन दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे? It is helping start the वो. Okay, so इस वाले okay, I will compare this later. First, let's continue to read. Okay, who will read? Okay, Shreya, why don't you read this? Yeah. Let's face it, iPads aren't cheap. Are not को short form है aren't cheap. Buying an iPad to be issued to every student and teacher would get expensive. Then there's always the worry that a careless student would accidentally break one, or that the un- unavoidable unavoidable accident would happen, leaving the iPad broken and useless, needing repairs or replacement. Okay, Shreya, can you explain? Can you summarize? Star hai, so you have to summarize, right? Yeah. There is written that iPads are too expensive, like too many costs to buy it, and how student will care it. If it broke, then we have to repair also, and students will worry that a careless student would accidentally break one. Can I tell you in Hindi? Sure. मतलब कि उसमें लिखा है कि मतलब अगर हम लोग आईपैड खरीदेंगे तो कितना सारा पैसा लगेगा, फिर बाद में अगर मतलब जो बच्चे वो अगर अच्छे से मतलब केयरलेस नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे आईपैड को, केयरलेस होंगे, तो फिर वो आईपैड अगर टूट गया तो फिर बाद में उसका कितना सारा पैसा लगेगा रिपेयर कराने के लिए. करेक्ट. थैंक यू सो मच श्रेया. आपने इंग्लिश में भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था, हिंदी में भी आपने करेक्ट दिया है. सो इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि iPads आर नॉट चीप, दे आर एक्सपेंसिव, राइट? तो दो तरीके से टूट सकता है. एक तो पहले स्टूडेंट केयरलेस है, मतलब स्टूडेंट ने ध्यान नहीं रखा तो टूट गया. दूसरा कि कोई एक्सीडेंट हो गया गलती से, स्टूडेंट तो ध्यान रख रहा था बट गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, दो स्टूडेंट जा रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से दे हिट ईच अदर, दे टकरा जाते हैं ऐसे, राइट? एंड देन वो गलती से गिर जाता है. सो अगर वो टूटा देन इट विल नीड रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट श्रेया. Alright, any word that anyone cannot understand, any difficult words, I'll tell you the meaning if you can tell me if there is a difficult word. Afifa? Teacher, can I say? Yeah, Shreya. No, teacher. Okay. Yes, Shreya. What is meaning of unavoidable? Unavoidable. Avoid मतलब क्या होता है? Avoid करना. हाँ, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. अन मतलब नहीं, अन मतलब होता है नहीं, अवॉइड मतलब आपको पता ही है, एबल मतलब एबिलिटी, जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता. ठीक है? यस. अवॉइड नहीं कर
अच्छा मेरे को हिंदी में लिखना था, ठीक है। हेलो नहीं कर सकते, यस। हाँ रिया बताओ। You can write can't avoid. Very good. Thank you so much for that. You are absolutely right, and that's what I'm going to write. When we cannot avoid, correct. Okay, who is this amazing person जिसने मेरी स्क्रीन पे इतना अच्छे से ड्राइंग बनाया है? Okay, so cannot avoid. Perfect. Any other word that you find difficult? I think बाकी सब तो No. easy है, नहीं? So let's move forward. Okay, who's going to read the next? All right, 4 participants raising hand. All right, Amrita, why don't you read this one? Yes. Having an iPad at your fingertips all day has the potential to be extremely distracting. Teachers would have to monitor constantly to ensure that students used the iPad solely for school purposes, and even then there are ways around that. Yeah. Can you summarize? Teacher, there is some hard words that you can add. Okay. Can anyone else summarize? That's very well, Amrita. It's okay. Amrita, even hard words. Acha, tell me. First line batao. I'll help you. Okay. So I will not tell you the meaning. You will still be able to understand. Okay. The first line है having से लेकर distracting तक. इसमें which is the hard word? Potential. Potential. ठीक है? So read before and read after. Even potential के without you can understand. Read. Has the dash to be. Okay. Having an iPad at your fingertips all day has the potential to be extremely distracting. So now what do you think it can mean? Dangerous. No. So forget the word potential. Potential हटा दो. Distracting का मतलब पता है? No. Okay. Forget ing. I distract का मतलब पता है? No. अच्छा ठीक है. Okay, we will read ahead and then let's try to guess the meaning. ठीक है अमृता? Teachers would have to monitor constantly to ensure students use iPad solely for school purpose. इसका मतलब समझा? I think that teacher would say that they are using only for school things. Yeah. And even then there are ways around that. मतलब? There means there is danger around them. Yeah. So around that. That से मतलब क्या है? Teachers monitor करे कि बच्चे सिर्फ स्कूल के लिए यूज कर रहे हैं. But even when teacher ये monitor करेंगे, there are ways around that. मतलब तभी भी बच्चे जब टीचर मॉनिटर करे उसके बावजूद भी बच्चे वेज फाइंड कर सकते हैं आईपैड को स्कूल के लिए नहीं किसी और चीजों के लिए यूज करने के लिए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ बट एक्चुअली में आप गेम्स खेल रहे हो. सो यू फाइंड वेज. इवन जब आपके पेरेंट्स ध्यान रखते हैं यू फाइंड वेज टू डू गो अराउंड इट. ठीक है? Now I will tell you the meanings of difficult words. So अगर आपको इतनी सी भी चीज समझ आ गई ना अमृता, it is okay. ठीक है? आपको जिस्ट पता चल गया पूरे पैराग्राफ का. जिस्ट क्या है? जिस्ट मतलब एसेंस, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. ठीक है? अब I'll tell you Teacher, the can I meaning. say meaning of Okay, yes, Shreya, potential means possible. correct. Very good. Potential का मतलब होता है possible. Extremely मतलब सबको पता है extremely, very. Distracting मतलब distract होना, इधर उधर Yeah. भटकना, ध्यान भटकना.
ठीक है, ध्यान सॉरी करना, ध्यान इधर उधर जाना। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो टीवी पे कुछ चल रहा है, मम्मी कुछ बना रही है, या हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, और अटेंशन इज नॉट 100%। ठीक है, टीचर्स वुड हैव टू मॉनिटर। मॉनिटर मतलब टू सी, लीडर, नो नॉट लीडर, मॉनिटर मतलब होता है टू सी कि व्हाट इज एवरीवन डूइंग, टू कीप एन आई ऑन एवरीवन। ठीक है, सबका ध्यान रखना कि सब क्या कर रहे हैं, टू सी To catch. teacher Teacher, your like voice is what happened. like in exam you are saying to us like that. Yeah, exactly. So I'm monitoring. You Even in freeze. class, what happened? Yes, Raj, are you saying something? Yes, you freeze. I am frozen. Okay. No teacher, you are fine only. Moving. Okay, fine. Amrita and Raj, I think it's your internet. And also, please, guys, you're not raising your virtual hand. So please raise your virtual hand. ठीक है? To ensure मतलब make sure that student use iPad solely. Solely matlab only. I hope you are all writing these difficult words. Okay. Okay. Last paragraph. Who's going to read? Who is going to read? Any volunteers? Any brave volunteer? All right. Yes, Bindya. Relying on a device that has to be connected to the internet to get the full functionality out of it is risky. To put it mildly, Mildly. one network outage can throw off an entire day's lesson, which is exactly why textbooks are just as important as ever. Yeah. Can you summarize, Bindya? There's a star, right? So we have to summarize. Yes, what is meaning of relying? Okay, forget it. अगर नहीं आता उसके आगे पढ़ो. You just have to tell me. जितना समझ आता है उतना बताओ. On a device that has to be connected to the internet. कोई चीज इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए to get the full functionality out of it is risky. Full functionality से कनेक्ट करने के लिए वो रिस्की है. To put it mildly. This mildly meaning Leave it. आगे जाओ. one network outage can throw off an entire day lesson. एक नेटवर्क का Outage मतलब बाहर का कोई चीज नहीं तो okay, read ahead. ओवरऑल क्या समझा बिंदा? अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो लास्ट लाइन का क्या मतलब होगा? क्या समझा? थोड़ा कुछ भी समझा? Okay, very good, Bindya. You did a good job. Really good job. It's okay. This was thoda difficult. I will help you out. Okay. It's very, very good. Relying मतलब depend. किसी चीज पे depend होना. Relying मतलब होता है depend.
So depending on a device that has to be connected to the internet to get full functionality out of it is risky. अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं होगा तो आधी से ज्यादा चीजें नहीं चलेंगी. तो फंक्शनैलिटी क्या होती है? फुल फंक्शनैलिटी मतलब एक फोन को पूरी तरीके से यूज करना, उसके सारे फंक्शंस को यूज करना, उसमें जितने भी फीचर्स है वो सबको यूज करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है. और अगर ऐसा कोई डिवाइस है जिसको इंटरनेट से हमें कनेक्ट करना पड़ रहा है तो वो रिस्की है. ठीक है. फीचर तो सबको समझ आता है ना. ठीक है. सो इंटरनेट से अगर हम कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो वो रिस्की है. तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, एक ऐसे डिवाइस पे हम डिपेंड हो रहे हैं जिसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ रहा है तो वो रिस्की है. क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गलत चीजें भी होती है and we are giving it to students, so it is risky. To put it mildly मतलब कि risky जब so when I'm saying the word risky, I'm using a mild word. Mild मतलब not strong. मतलब अगर मैं कम से कम बोलूं तो रिस्की है, बट ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, बट कम से कम रिस्की तो है ही वो. उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है बट कम से कम वो रिस्की है. टू पुट इट माइल्डली. वन नेटवर्क आउटेज मतलब इमेजिन आपके घर पे जब जिस दिन इंटरनेट नहीं आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो आप पूरे दिन की क्लास मिस कर देते हो. तो वही इस लाइन का मतलब वही है. आउटेज मतलब ऑफ, जिस दिन नेटवर्क ऑफ होता है या फिर ढंग से कनेक्ट नहीं होता है. कैन थ्रो एन एंटायर डेज लेसन. अगर नेटवर्क आउटेज हुआ और हम आईपैड से ही पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन का जो भी लेसन है वो सब हमारा नहीं होगा. विच इज एग्जैक्टली वाई टेक्स्ट बुक्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज एवर. एंड इसी वजह से टेक्स्ट बुक हमेशा पहले जितनी इम्पोर्टेंट थी, आईपैड के होने के साथ साथ उतनी ही इम्पोर्टेंट है. Any doubt anyone with the passage? जिसको कोई word नहीं समझा या okay. Anyone else? Good to go to the questions? Yes. Okay, give me thumbs up. Shreya, you know you break rules when you say yes thumbs up, so use your signs. जो reactions है reactions use करो. Because imagine अगर एक साथ सब लोग हाँ ना कुछ भी बोलेंगे तो मुझे समझेगा ही नहीं. Give me thumbs up if we are good to go, or raise your virtual hand if you have a question. Okay, I can see people giving me lots of thumbs up. Shashwat, Akshay, Harsh, Jayashree, good to go, or questions? Okay, good to go. Harsh, Jayashree, Shashwat, good to go. Okay, Harsh, good to go. Harsh, good to go. All right. We'll move forward. Okay, who'll answer the first question? Third question, actually. What is author's point of view in Article B on using iPads in classroom? On using why is this not working? On using iPad in classroom. Okay, so what is author's point of view? Who will tell me? Muskan? Hi Muskan. Yes, can you answer this question? What is author's point of view in Article B? iPad use करने का, what's the point of view author का? Yes, miss author का point of view ये था कि अगर कभी means like in one line जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन का आंसर दिया था. If I go back, the author's perspective on iPad usage in classroom is that students should be allowed to have iPads in classroom. So same language use करके मेरे को आर्टिकल बी का आंसर दो. Okay. The author point of view in Article B on iPad usage in classroom. On iPad usage
usage in classroom Is is that that hmm, students should be allowed should they to be allowed? have उनको allow iPad in class. एक सेकेंड मुस्कान ये तो आर्टिकल ए का आंसर है. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस सो दैट आप ये सेम लैंग्वेज यूज कर पाओ आर्टिकल बी के उसके लिए. सो आर्टिकल बी वाला जो ऑथर है उसके हिसाब से क्या हमें यूज करना चाहिए क्लासरूम में? हाँ कि ना? सिंपल हाँ नो करेक्ट. तो the author's perspective on iPad usage in the classroom is that students should not be allowed. यहाँ पे not आ जाएगा. First article में author was like हाँ करना चाहिए. Second में the author is against it. Author is saying no. इसलिए वो first यहाँ पे okay ठीक है समझा सबको. अभी we will come to second question and see why. So author's point of view in article B on iPad usage is that student पूरा लाइन लिखना है. मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रही हूँ बट आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज आईपैड इन क्लासरूम. राइट यही समझा ना हमें पूरे आर्टिकल से. ओके फोर्थ, how does this choice of words show us this perspective? Author ने कौन से words use किए which is telling us this? Who will answer? Shashwat, I require you to answer this question. Shashwat. Shashwat. Yes. Yes. First tell me author का point of view क्या था? Author wants to use or not want to use? Not want to use. Okay, perfect. Now कौन से words है आर्टिकल में जो हमें ये बात बताते हैं? आर्टिकल में उसने ऐसा क्या बोला है? कौन से words है which is telling us कि he does not want to use? Why textbooks are just as important as ever. Okay, उससे पहले one network outage can throw off an entire day's lesson. Right? These are the words. कि Yes. एक अगर नेटवर्क खराब हुआ तो पूरे दिन का लेसन बर्बाद हो जाएगा. इसलिए टेक्स्ट बुक्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट. राइट तो ये पूरा लाइन. कोई और भी लाइन है? अदरवाइज दिस इज इनफ. ओके वंडरफुल. लेट्स सी. The author in article B believes that students should not be given iPads in the classroom. The text in article B says one network outage can throw off an entire day lesson, which is exactly why textbooks are just as important as ever. So notice करो, शाशिद आपने correct choose किया था. The text in article B says, उसके बाद comma and then quotation mark. जो हम as it is copy करते हैं ना टेक्स्ट में से तो उसमें कोटेशन मार्क उसके स्टार्टिंग में और लास्ट में कोटेशन मार्क होता है. फिर दिस एविडेंस हेल्ड प्रूफ दैट ऑथर्स पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड आईपैड इन क्लास. ये लाइन हमें ये बता रही है, ये एविडेंस है उस बात का, प्रूफ है उस बात का कि ऑथर का पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को आईपैड अलाउड नहीं होना चाहिए क्लास में. ठीक है. नाउ वी हैव आर्टिकल ए का ऑथर, ही इज लाइक आईपैड होना चाहिए एंड ही गेव यू रीजंस. देन वी हैव उसके रीजन थे कि वो आउटडेटेड हो गया है ये सब. आर्टिकल बी का है ऑथर, वो बोल रहा है कि आईपैड्स अलाउड नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं आया तो पूरे दिन का जो लेसन है वो बर्बाद हो सकता है. नाउ विथ दैट वी हैव टू थिंक, आई वांट यू टू थिंक कि विच ऑथर परसुएडेड यू. किस ऑथर की बात आप किस ऑथर की बात से आप ज्यादा अग्री करते हो. ठीक है. एंड विच स्पेसिफिक टेक्स्ट एविडेंस इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग. अग्री, कन्विंस. और पूरे टेक्स्ट में वो कौन सा बात था जो ऑथर ने बोला जिसकी वजह से आप उसकी बात से मान गए, उसकी बात से कन्विंस हो गए. अमृता. I agreed with the first authors.
Okay, and what evidence? Okay, so you are saying iPad should be allowed, right? Yes. Okay, so can you tell me कौन सा टेक्स्ट है पूरे इसमें क्या उसने बोला जिसकी वजह से आप उससे अग्री करते हो? Okay, this is article B. Let me switch on article A so that you can tell me exact text that I you agree that if we will take textbook, then our bag will also get heavy. If we will take one iPad, then it will be not heavy. And it is dangerous to take, but we can, when we have done our study, then we can collect to teacher. He will put that. He will write name on that. And if means if we internet problem, then we teacher can put download in everything like you PDF, then they can read on that. okay, wonderful. ठीक है, so okay, fine. So Amrita has her point of view. Okay, thank you so much for sharing that, Amrita. Okay, next person. I want everyone to answer this. Okay, Muskan. Miss, I think students should be using iPad. Students should be using not iPad Should not because be using. So you say I agree with author B's perspective. I am agree for Article B. Article B's. I am agreeing with articles B's author's perspective. Okay. आर्टिकल बी के ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अग्री कर रही हूँ, यही बोलना चाह रहे हो ना? Yes. तो आर्टिकल बी के बीज अपॉस्ट्रोफी एस के ऑथर के ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू को पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऐसे पूरा सेंटेंस बोलो. Okay. कंटिन्यू. बिकॉज because student बस मैं हिंदी में बोलूं. श्योर. बस जैसे कि अगर हम टेक्स्ट बुक यूज करेंगे तो हमें मतलब नॉलेज भी होगी कि कैसे टेक्स्ट बुक्स में से आंसर फाइंड करते हैं, और हमें मतलब टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा वो रहता है. क्या? तो आई थॉट कि टेक्स्ट बुक iPad not use for classroom. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मुस्कान. बट वन थिंग, हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि आप जो आर्टिकल बी का जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, जो वर्ड्स लिखे हैं, इसमें से कौन से वर्ड्स आपको कन्विंस किए, कौन से वर्ड्स आप सबसे ज्यादा अग्री करते हो? सो कैन यू चूज. मैंने आर्टिकल बी डिस्प्ले किया है. कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कौन सा लाइन है जिसकी वजह जो आप सबसे ज्यादा अग्री करते हो? जैसे कि अमृता ने शेयर किया था बैग्स विल बी हेवी अगर हम टेक्स्ट बुक यूज करेंगे. सो वो आर्टिकल से एक लाइन थी जो उसने चूज की थी. वैसे ही क्या आप भी आर्टिकल से लाइन चूज कर सकते हो? Okay. One second. So यहाँ पे so there are lots of reasons that the author has given. In this first paragraph, author is talking about iPad expensive होता है. क्या ये बात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर टीचर को पूरे टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कुछ और नहीं कर रहे, ये सेकंड बात इम्पोर्टेंट है? या थर्ड बात इम्पोर्टेंट है कि अगर नेटवर्क आउटेज होता है तो पूरे दिन की पढ़ाई मिस हो जाएगी? तो तीन बातें ऑथर बोल रहा है ना. फर्स्ट बात है एक्सपेंसिव, सेकंड कि टीचर को मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो पढ़ाई कर रहा है खेल नहीं रहा है, थर्ड पॉइंट कि नेटवर्क आउटेज हुआ तो पूरे दिन की पढ़ाई मिस हो जाएगी. सो ये तीनों में से कौन सी बात से आप सबसे ज्यादा अग्री कर रहे हो? थर्ड पॉइंट. तो इससे द टेक्स्ट में जो बात है, वन नेटवर्क आउटेज कैन थ्रो ऑफ एंटायर डेज लेसन, इसलिए टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. या तो लाइक दैट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, यू वर नॉट सेइंग रॉन्ग एनीथिंग, बट हमारा क्वेश्चन का आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे थे. क्वेश्चन क्या है? व्हाट स्पेसिफिक टेक्स्ट एविडेंस इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग?
सो टेक्स्ट में जो आर्टिकल बी में जो लिखा है उसमें से क्या कौन सा लाइन है जिसकी वजह से आप कन्विंस हुए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, तो हमें टेक्स्ट में से ही लाइन चूज करनी है। गॉट इट मुस्कान? Okay. ऑलराइट, श्रेया, वुड यू लाइक टू शेयर? Yes. Teacher? या बोलो ना, आई एम वेटिंग फॉर यू टू Okay. The author first agree with that, agree in B, because in he said he right, because if children will take the iPads to school, then it will be broken. If we will play everyday games, it will hang, and we if they have to download something in iPad, then if there is no space, then how they will download the app in ठीक है mobile. श्रेया, हमें एग्जैक्टली वन लाइन चूज करना है टेक्स्ट में से, हमें हमारा चीज इसमें नहीं डालना है। आई रियली लाइक दैट यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, टेक्स्ट में और जो हमें पता है हम दोनों को कंबाइन करता है। अभी इन्फ्रेंसिंग नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ टेक्स्ट से चूज करना है कि कौन सी लाइन है ऑथर की जो जिसने हमें कन्विंस कर दिया। तो सेम चीज है, मैंने मुस्कान को बोली 3 पॉइंट्स है, तो आप कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इट्स एक्सपेंसिव, या फिर टीचर को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कुछ और नहीं खेल रहे हैं। थर्ड पॉइंट कि नेटवर्क आउटेज से पूरी क्लास मिस हो जाएगी। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू? I think so expensive and that last one. Last ओके student. ओके, लास्ट पॉइंट, नेटवर्क आउटेज से एंटायर डे का क्लास मिस हो जाएगा, ठीक है। सो दोज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। ऑलराइट, सो हियर आई हैव रिटन one perspective. The authors of article B persuaded me the most because she said that iPads aren't cheap and that a careless student could accidentally break one. This persuaded me to believe that iPads should not be used in the classroom and that we should stick to using our textbook because they are more reliable. So this is the perfect answer. So इसमें मैंने ये भी बता दिया कि आर्टिकल बी वाले ऑथर ने मुझे परसुएड किया क्योंकि, और कौन सा पॉइंट टेक्स्ट का एविडेंस क्या लिया मैंने? एविडेंस फॉर टेक्स्ट इज दिस, iPads aren't cheap and a careless student could break it. So इस बात ने मुझे परसुएड किया ये बिलीव करने के लिए that iPad should not be used in classroom and that हमें टेक्स्ट बुक ही यूज करना चाहिए because वो ज्यादा रिलायबल है। तो इस तरीके से आई एम राइटिंग माई आंसर। All right, for your homework I will be sending you this. I need you to write these 3 answers. 1, 2, and why am I asking you to write? English में I never ask you to write, है ना? English में मैं आपको कभी नहीं बोलती कि you write your answer, write the answer. Why I'm asking you today is because I want you to learn how to write in a good manner. एक correct manner में आप आंसर कैसे लिख सकते हो, ठीक है? How will you improve your English? If you learn these words, if you learn how to write it in a better way, what you are saying, what you are writing is not wrong, but हम better लिख सकते हैं। and better कब लिख पाएंगे? जब when I tell you कि this is a better way of writing. Yes, so notice करना जब आप आंसर लिख रहे हो वो तीनों नोटिस करना कि किस कैसे कैसे ऑथर ने लिखा है। अंडरस्टूड? Yes. ओके, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जब आप लिख रहे हो आप ये नोटिस करो कि ऑथर ने कैसे लिखा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क यू यू आल्सो टेल मी द आंसर इन द सेम वे। समझा? आई वांट नेक्स्ट टाइम आप सेम वे में आंसर करो मुझे, एंड इसलिए आपको ये नोटिस करना है कि ऑथर ने ऐसा कैसे लिखा है। अगर आपको लाइन याद करनी है, अगर आप समझ के याद कर सकते हो, दैट इज आल्सो ओके, ठीक है? ऑलराइट, इट्स 9:25. I'm gonna give you 1 minute. It's 9:26.